Okay, again, welcome all of you. Today I will discuss about the MATLAB. First, basic, what is the MATLAB? MATLAB is an integrated technical computing environment that combines the numeric computation, advanced graphics and visualization and high-level programming language. High-level language of technical computing, development environment for engineering scientists, interactive tool for design, problem solving, mathematical function libraries, graphic and data visualization tools, custom GUI and external interface C, C++, Python, Java, and this is MATLAB product family. That is MATLAB interlinked to the MATLAB programming language and 2D graphics, 3D graphics, coder and computational techniques and external interface. Today, our objective is design of single phase, half wave and full bridge controlled converter with R and RL load. Second is design of single phase, half wave and fully bridge control converter with R and RL load. Today the objective of this session is design of control and uncontrolled rectifier with R and RL load. Okay, everyone ready for MATLAB? First step is open MATLAB. Any version you have available, that is no problem. First open the MATLAB. सर हमें भी डाउनलोड करनी है ऐप। नहीं डाउनलोड नहीं करना है इसको, आपके पास जो है उसको ओपन करिए। क्या है हमारे पास? ये MATLAB पीसी जो में है ना, वर्जन है ये उसको ओपन इंस्टॉल करिए। करनी पड़ती है। सर मतलब इंस्टॉल तो करनी है ना ऐप? तो आई हैव ऑलरेडी सेंडेड वन मेल टू इंस्टॉल द MATLAB ना वर्जन। सर आपके पास नहीं अभी है MATLAB क्या अभी इंस्टॉल? नहीं सर है तो अभी आप कर। देखिए कैसे करते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आप कर लीजिएगा, दैट इज नो इशू। ओके, ठीक है सर। ओके सर। फर्स्ट क्लिक द MATLAB Simulink, any version, it may be 2010, 12, 13, 14, 16, 19 is also available. And second step is new Simulink model. First target is our to design the single phase half wave control rectifier. Single phase half wave control rectifier means we have required the single phase supply and diode and resistive load. This window is open. I hope all of you please save any name, desktop,
single phase half wave, phase half wave. Okay. Going to use phase. Okay. Next point is click to library browsers. Library browser. Next step is click to library browsers. And next point is SimCap. SimCap, if you have available the older version, click Sim Power System. Sim Power System block. Sim Power System block. Sim Power System. Next is coming to the power electronics segment. Power electronics segment, we have required to diode. This click and right side click, add to the single phase half wave. This is already dragged to the Simulink model. Next element is required single phase supply, that is electrical source. Electrical source, AC source current, AC voltage source. We have required the AC voltage source. And next step is we have required to element. So element, always take the series RLC branch. Don't take RL load. RL load is used, series RLC load. RLC used in power system, and series RLC branch is used in power electronics. And first step, this block, this first is AC source, second is diode, third is load. And click this Control R, rotate, and this single phase source connected to the diode, and diode M is measurement point for the diode. You can click this, show measurement port is absent, and connect this load. First load we are consider the R load. Click resistance, take the 100 ohm resistance load, and next step is connect this block. Next step is measurement of voltage across the load and source. Then again go to the library, Sim Power System, measurement block. This measurement block, we have required to measurement voltage source. This right click, voltage source, and again click to scope, and this voltage source, two voltage source, one voltage source is measurement across the load. This block, and next point is this is connected to this point.
Okay, and voltage across the load, and next step is this one voltage source is also, this voltmeter is connected across the source. And next is, this is scope. Click, and number of axis is required to history, can erase, and first point, this point is, first point is to the supply, and second point is connected to the output portion. Neat and clean. Okay, next last point is connected to the, click to the sim power system, and this block is power GUI for interfacing the all components, and save all the things, and time is 1 second. Means you are getting the output voltage and current. First is supply voltage, and zoom. I hope you are getting. Hello, हेलो, यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये आपको मेटलैब का दिख रहा है? सर अभी हेलो? तो आप आ रहे हैं, ऐसे पहले दिख रहा था सर। यस सर, अब हाँ दिख हाँ, रहा अभी दिख रहा होगा, देखो दिखा। वेव। तो ये क्या है? दिस इज सिंगल फेज हाफ वेव, दिस इज सप्लाई वोल्टेज फर्स्ट पोर्शन। देखिए, दिस इज ऑटो स्केल, ऑटो स्केल में देखिए, दिस इज अपर पोर्शन, अपर पोर्शन इज सप्लाई वोल्टेज and lower portion is output voltage. For half cycle you are getting the only positive half cycle. Negative half cycle क्या हो रहा है? That is, diode is reverse bias, voltage across the load is 0. Okay. Yes sir. And next step is you can change the supply voltage. The supply voltage is 100 voltage peak to peak, 100 volt, or you can put 230 volt. Peak to peak means Vs into root 2 supply voltage as per Indian calculations. 230 into root 2. Root 2 means 1.41, and phase 0 degree, and frequency is 50 Hz as per Indian calculations.
And okay, this is single phase source. First we have required to understand the circuit diagram. Circuit diagram में क्या होता है आपका? Circuit diagrams में आपके single phase source, diode and load. Then we have this source is AC voltage source. You can put any value as per your desired. We are putting the 230 volt into root 2. That is peak voltage. And frequency is 50 Hz. Sample time is 0. And okay. Next is connected the series diode. Diode is this value is always default value. Default. You have no required to change anything. And measurement the voltage across the load and source voltage. जैसे हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ड्रा करते हैं, तो you are getting the this waveform. You can have different load means you can change the voltage. This is 100 volt, 100 ohm. You can change 200, 1000 something, and you can observe the performance of. Okay. Load changes output. Voltage is some also changing. So you can observe different load. You can change load 100 ohm, ohm, and observe performance of the converters. This is continuous power use block is important. Without this block, you cannot interface all the components. So this is simply drag from the power system. तो सभी लोग बनाइए. हेलो, एक बार सभी लोग बना के दिखाइए वहां पे. कोई प्रॉब्लम आ रही है? हेलो हेलो, एनीवन? यस सर. कौन बोलेगा? हाँ, आप लोग बना रहे हैं क्या अभी? यस सर. MATLAB है या अभी आप खाली सीख रहे हैं, देख रहे हैं? So sir, the main motive of MATLAB is to design virtual experiments or project. हाँ, virtual experiment with at a different load. You have not required any load. You can change and observe the Can we do performance of the projects which converter. use software using MATLAB? Yes. Again, repeat. Sir, I'm saying, can we design or perform experiments which use softwares like we use? So can we do it using MATLAB? In any converter you can design with the help of MATLAB. That is, first design this is single phase half wave uncontrolled rectifier. Half, and next step is design the single phase full wave control rectifier, uncontrolled rectifier. Again come to the diode replaced by thyristors. Next step में हम diode को replace करेंगे with thyristors. Okay, right? You are getting my point? And other software is also available for design. Next class after finish the MATLAB version, I will introduce the PSIM software is also available. PSIM. Okay. I will take next session after finish 2 or 3 lectures MATLAB for first design and okay. Uncontrolled, control rectifier, DC chopper, inverter design. After finish this, again same thing is implemented in a PSIM software. Okay, ये समझ में आई बात सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. देखिए, हम इसी को आप अलग से नहीं बना रहे हैं, अभी फिर से बनाए इसको. RL लोड कर रहे हैं. देखिए, R रिप्लेस बाई RL लोड. क्लिक दिस. RL डिफॉल्ट वैल्यू for example that is 20 and load resistance is 50 ohm and inductance is 50 millihenry. E की power -3 means 10 की power -3, that is 50 millihenry. And again run. Okay, this waveform means
Okay, एक मिनट, just 1 minute. Click this again. That means this diode is conducted to the some negative portion due to the presence of inductance, forcefully conducted. That is already discussed. देखिए forcefully conducted. अगर due to the presence of load resistance, the only resistance at omega t is equal to pi, the voltage becomes zero. But due to the presence of inductance, this thyristor during some duration, it forcefully conducted, and we are getting the negative output voltage. Negative output voltage. You can zoom. ये देखिए, ये आपका नॉर्मल, यू कैन जूम. देखिए, you are getting the negative voltage during some duration. So you can observe at different load, means you can change, you can observe the performance with the change of this. Again you are putting this 50 Henry to 100 millihenry load, and you can observe the performance. Again this load, and you can observe the performance. As you wish, at different load, as hardwares, you have you cannot change. One time the load is designed for 50 ohm and 10 millihenry, you cannot observe the performance at different load. But in software, you can analyze. Okay, this is single phase half wave uncontrolled rectifier with RL load. RL load means during the negative cycle for some duration, you are getting the negative output voltage. The lower section is output voltage. Output voltage में आप देख रहे हैं negative voltage. You are getting the negative voltage for some time duration due to the presence of inductance. Okay, the first portion is, any doubt? Hello, Wajra, you are Yes, getting sir. my voice? यस सर, Any यस doubt? सर. आपको दिख रहा है? यस सर. सर मैं अभी आई, मेरा नेट नहीं चल रहा था, अब कनेक्ट हो गया. अभी कनेक्ट हुआ. कौन था? यस. बताइए. शुभम, अभिषेक, देखना पड़े कौन कौन है. अनुराग. यस सर. हेलो. हेलो. हाँ, आपको समझ में आया ये कैसे निगेटिव वोल्टेज जा रहा है आरएल लोड के लिए? डिफरेंस क्या आया आर और आरएल लोड में? आर और मतलब वही आपने इसमें वो सिंगल फेज हाफ वेव वाला कर रहे हो ना सर आप इसमें? हाँ हाँ, हाफ वेव में जब यू आर पुटिंग द आर लोड एंड इफ यू आर पुटिंग द आरएल लोड, तो डिफरेंस क्या हुआ वेव फॉर्म में आउटपुट वोल्टेज के? नीचे में भी हमें मतलब नेगेटिव वोल्टेज भी मिलती है एक्स्ट्रा हाँ, निगेटिव वोल्टेज क्यों मिल रही है? इंडक्टर की वजह से. इंडक्टर की वजह, दैट इज राइट. इंडक्टर की वजह से यू आर गेटिंग द निगेटिव वोल्टेज फॉर सम ड्यूरेशन. देखिए आप, निगेटिव वोल्टेज ये जो मिल रहा है, दिस पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिस पोर्शन, दिस निगेटिव पोर्शन. वहां पे क्या था? ओनली यू आर गेटिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव साइकिल इज आउटपुट वोल्टेज इज 0. यस. ओके, तो दिस इज फॉर आर एंड आरएल लोड. नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कंट्रोल्ड को दूसरे पॉइंट पे आए. ये क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से हम आते हैं. अगेन देखिए, अभी फिर से एक बार हम फिर से न्यू विंडो ओपन करते हैं. अभी आपको सिंगल फेज हाफ वेव एंड हाफ वेव के बाद हम जा रहे हैं सिंगल फेज फुली कंट्रोल कन्वर्टर. ठीक है, सबसे पहले एक बार बंद कर दें इसको, दूसरा खोलें. एक बार सभी लोग फिर से एक बार बंद करके आप लोग देख लीजिए. अगेन सबसे फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक टू द MATLAB. फर्स्ट पॉइंट, जो लोग अभी से आ रहे हैं ज्वाइन,
First click the MATLAB. Next point is go to new and Simulink block and put any name. This name is single phase don't give space, single phase fully uncontrolled rectifier. Okay, you can put any name as per your choice. Okay, single phase full wave uncontrolled rectifier. Uncontrolled means we have required the 4 diodes. So first click to the library. This is library browsers. Again go to the SimCap. If the older version is available, then directly go to the SimPower system. If you are available the older version, that is before 2013, so click SimPower system. This SimPower system block. SimPower system. Again click Power Electronics. Means we have required 2 diode, 4 diode, and again electrical source, AC voltage source. Click this and add to the single phase control rectifier. Click this and again element series RLC branch, and next is measurement block, that is voltage source, and next is click to the SimPower system power GUI block for interfacing. First is power GUI block, putting this side, and AC voltage source, and click this. If you are required to rotate, Control R, this rotate, and M point is so measurement portion is uncheck 4 diode. You require the 4 diode. Right hand side, click copy and paste. 1, 2, 3. It is 4 diode. Okay. 4 diodes. This diode is connected to this diode. This leg is connected to this portion, and this portion is connected to this point, and again okay, and load Control R for the rotation, and first putting resistive load for 100 ohm, and load is connected this point, and measurement output voltage this point, one segment, and this point is connected to this point. Okay, and this is source voltage. Source one point is connected to this point, and other point is connected to the this
find and okay, and you are putting peak to peak. Peak voltage means RMS voltage are single phase 230 volt into root 2. Root 2 means 1.41 phase delay 0. Frequency is 50 Hz. This is source voltage and 4 diodes. This is single phase full wave bridge converter. And next point is connect the scope, and one source is also for measurement for input voltage. This point is sorry, one point is connected to this portion, other point is connected to this point. Okay, next point is scope, click, sync and right click, add to the scope. That is, you have required to two axes, because you have required to measurement of voltage, input voltage and output voltage. You can choice, you can click this for one scope for voltage, and second scope is connect to the input voltage, different scope as per your choice. Otherwise, this is one option. Second option is for one scope make two axes. Number of axes is 2. History always erase, uncheck, because the data limit is 5000 पॉइंट को अनचेक करना है, क्योंकि 5000 पॉइंट तक ही आपका सेव होगा. हमको और भी पॉइंट चाहिए. दिस पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स, सेकंड पॉइंट इज आउटपुट वोल्टेज. सेव and run. ओके सर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? एसी को डीसी में, हाँ. अच्छा ठीक है सर. देखिए जूम, ये आप देखिए आपको क्या मिल रहा है. दिस इज, पहले क्या था, इस पे आप क्लिक करेंगे ऑलवेज. देखिए इसमें आपका जूम एक्स पे आप क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस में जूम होगा. ये देखिए, दिस इज सिंगल फेज सप्लाई एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज बोथ द साइकिल्स. यू आर गेटिंग द पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज. अगर प्योर डीसी आउटपुट आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको फिल्टर की रिक्वायरमेंट होगी. कनेक्ट द फिल्टर अक्रॉस द लोड. फिल्टर, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे फिल्टर को कैसे डिजाइन करेंगे. हाउ टू कनेक्ट द फिल्टर अक्रॉस द लोड मींस दिस पल्सेटिंग डीसी आउटपुट कन्वर्टेड इनटू द डीसी. एक्सक्यूज मी सर, पल्सेटिंग को आपको डीसी, ये साइन के बाद. हेलो, हाँ पूछिए सर. ये जो स्कोप है ना, स्कोप जो है ना सर, हाँ सर इसका फंक्शन क्या है इसका सर? स्कोप का फंक्शन क्या है? स्कोप जो आपकी वेवफॉर्म आ रही है उस वेवफॉर्म को वो डिस्प्ले करेगा, बस इतना काम है स्कोप का. अच्छा ठीक है. ये उस वेवफॉर्म को ये डिस्प्ले कर रहा है. जैसे आपका जो स्कोप है, स्कोप को आप अगर एक टैब लगाते हैं तो आपको 2 स्कोप लगाना पड़ेगा. एक इनपुट वोल्टेज के लिए, सेकंड फॉर आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. अगर आप उसी में क्लिक करके देखिए, स्कोप में क्लिक करके यहाँ पे देखिए दिस पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे. इफ यू आर पुटिंग द 2 तो एक ही स्कोप पे 2 एक्सिस हो जाएगा.
वन फॉर अदर, सेकंड फॉर अनदर। तो इसके लिए आपको एक ही लगा के दोनों कर सकते हैं। एंड pulsating DC output voltage, you are getting the pulsating DC output voltage। ये है आपका pulsating DC output voltage। एनी डाउट? शुभम, वाजिला, बोलिए। यस सर। एनी डाउट? नो सर। सूर्याज। सर हाँ बोलिए। सर लोड आर के लिए हम सर फेज 0 लेते हैं ना। हाँ हाँ, फिर सर लोड सर आर के लिए। हाँ बोलिए बोलिए, सर पूछिए। सर फेज लेते हैं ना हम 0 लोड आर के लिए। फेज मींस क्या होता है कि अभी सिंगल फेज सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई में फेज क्या होता है, फेज में डिफरेंस नहीं होता है। अब इफ वी आर पुटिंग द थ्री फेज सप्लाई, तो वन फेज इज 0 डिग्री, सेकंड फेज इज शिफ्टेड फ्रॉम द फेज ए 120 डिग्री, एंड थर्ड फेज इज शिफ्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द फेज ए 240 डिग्री। हम उसमें जब थ्री फेज डिजाइन करेंगे तब आपको बताएंगे, वहां पे आपको फेज को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 0 डिग्री और 120 डिग्री और 240 डिग्री वहां पे करेंगे थ्री फेज में। सिंगल फेज में तो कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और कौन पूछिए, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं। एनी डाउट? सर हाँ बोलिए। सर जो आपने आज पढ़ाया वो तो समझ आ गया, लेकिन जैसे हमने हाँ, इंस्टॉल की है मैटलैब, हमने इंस्टॉल की तो इसमें पूछ रहे हैं आपके पास वो लाइसेंस है मैटलैब का, तो उसमें क्या करना है? नो। नहीं आपके पास तो लाइसेंस नहीं, पायरेटेड यूज करो ना। सर कॉलेज की आईडी? कॉलेज की नहीं, जो मेटलेब पायरेटेड पायरेटेड क्वालिटी। उसमें लाइसेंस दिया रहता है। लाइसेंस दिया हुआ आपने? हमने नहीं दिया है। अरे जब आप मेटलेब लेते हो ना किसी से पायरेटेड वर्जन, तो उसमें आपको उसमें की दिया रहता है। आपके पास की नहीं है तो उसमें नो कर दो, नो कर लेकिन वो दें? 1 मंथ के लिए चलेगा। हाँ 1 मंथ के लिए चलेगा फिर आपके लिए। तो फिर परमानेंट चलाना है, फिर कैसे चलाएंगे सर? आपको हम दे देंगे, हमारे पास है पायरेटेड वर्जन, दैट इज नो इशू। ओके, ठीक है सर। कितने लोगों के पास इस समय मेटलेब है? हाउ मेनी? लगभग है ना सर सभी के पास? सर मेरे हाँ शुभम बोलिए। पास हाँ अभिषेक पहले बोल। सर मेरे पास है हाँ बोलिए। पायरेटेड वर्जन। अच्छा ठीक है, जिसके पास है वो मानिश ओके, ठीक है। सर मेरे पास है पायरेटेड वर्जन। Okay, okay. This next point is this resistive load replaced by the RL load। अच्छा, इसकी वेवफॉर्म को कैसे सेव करेंगे ये देख लीजिए पहले तो एक बार। देखिए ये दिस इज योर वेवफॉर्म। आप कैसे करोगे वेवफॉर्म को? सिंपल वे, पहले तो आपको टुडे आई विल डिस्कस द सिंपलेस्ट वे। दिस वेवफॉर्म, this control print screen and paint and paste and right click, invert the color and simply copy and open the word file and simply paste and this output voltage and input, upper portion is input voltage and lower portion is output voltage, and circuit diagrams. For the circuit diagrams, simply click copy the current view, ये कर सकते हैं, अदरवाइज कॉपी कर सकते हैं आप ये। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन कॉपी द करंट व्यू ऑफ द क्लिपबोर्ड किसी भी फॉर्मेट में। आपने कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
ये ठीक है। ये आप ऊपर रखिए सिमलिंक मॉडल को और वेवफॉर्म को इसके नीचे रखिए और यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज सिंगल फेज full bridge converter uncontrolled rectifier, and this is waveform output voltage output current. This is upper portion input voltage, lower portion is output voltage. The two experiment is already done. ठीक है। नेक्स्ट आर को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट आर रिप्लेस बाई आर एल लोड। आर एल क्लिक आर एल putting the value of this 50 millihenry, resistance is 100 ohm, save and टाइम को कुछ भी पुट कर सकते हैं। दिस टाइम इज 1 second or 10 second। 1 second means it running fast, 10 second it take time, and for R and RL load। सर आप ये लेक्चर गूगल क्लासरूम में ऐड कर दीजिएगा सर। गूगल क्लासरूम में ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी देखिए ये हो गया। अभी हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर पे आते हैं। देखिए फिर से एक बार हम अगेन इसको आप पेस्ट कर लेंगे, बार बार इसको पेस्ट करना नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से एक बार जो लोग अभी सेशन ज्वाइन किए, देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप न्यू सिमलिंक मॉडल। सिमलिंक मॉडल नेक्स्ट पॉइंट इज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर पे आते हैं। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर मीन्स स्टॉप सेव। हाँ अगेन देखिए नेक्स्ट स्टेप इज go to the sim power system। sim power system, if the older version is directly sim power system, if latest version clicks sim cap and again click the sim power system। next power electronics we have required, next point is diode replaced by thyristors। thyristors again source, electrical source is AC voltage source, again element is series RLC branch। always put series RLC branch, don't put series RLC load। series RLC are parallel load used in power system। next point is source, next point is measurement block। voltage, you can measure the voltage, current also you can measure, also current is, that is no problem। add this time is always put current is also, that is no issue। any point you can measure, any component performance you can observe। next point is come to the this block and single phase supply। this is single phase supply is connected series with this, and M point is unchecked, so measurement portion अभी अनचेक कर रहे हैं, बाद में बताएंगे अनचेक क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस। अगर आपको कंट्रोल आर this okay, this is R
First is R load, resistance ohm is 100 ohm, and next is okay. One portion is this, and across the loop, and this time also connect measurement of output current. So this ammeter, that is current measurement, always connected in series. Voltmeter is always connected in parallel. And next step is this portion. Again, next point. This point is library. Click sync scope. Scope. First two axis uncheck, and number of axis is 2, means this axis is first portion is output voltage, second point is connected to the output current, and 3 axis कर देते हैं again, converted 3 axis. हेलो, हाँ हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए.
अनुराग। अनुराग हाँ हाँ। हो गया खत्म। पता नहीं यार, आएंगे शायद से वापस, सब कुछ कह नहीं सकता। यार खत्म तो ये तो 10:45 का हो जाना था। यार ये तो पढ़ा हुआ सारा मैटलैब यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो उसके बाद भी क्लासों में गया था? हाँ मैंने पूरा कोर्स किया। गंदी बात है। सही है। तूने अभी उसके अलावा कौन सा कोर्स किया जो बताया तेरे को मैंने? नहीं, कोई नहीं किया। मैंने वो भी नहीं किया। मैंने वो कर लिया पाइथन का। हाँ। मेरा कल पाइथन खत्म हो जाएगा। अच्छा। अब ठीक मैं है। अगला अब मैं अगला करूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग का। एडोब फोटोशॉप। ठीक है। 18 बच्चों को एक साथ दुख दे रहा है? साले 18 को क्या दुख देना इसमें भाई। नहीं, 18 एक माइनस कर लिया अपने आप को। तुझे क्या लगता है अखिल वगैरह जागे होंगे? क्या पता, नहाने अगर नहीं गया तो जागा ही होगा। सोए होंगे भाई, ये लोचन तो पक्का सोया होगा ऑन करके। अच्छा। मैं खुद तेरी कसम अभी सो के उठाऊं 5-10 मिनट पहले। जल्दी जल्दी अच्छा, मैंने पाइथन ज्वाइन पढ़ते किया। पढ़ते। पाइथन पढ़ते पढ़ते। यार सुबह सोया मैं 5:30 बजे। ओह, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। नाइस। तूने मेरे को गंदी आदत डाली हुई है साले रात रात को जागने की। मैं कौन सा फ्लू दे रहा हूँ तेरे को? तब भी यार। ओए जाओ चले फिर भाई, आ ही नहीं रहे वो। ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय। वेरी नाइस। खुदा जिंदगी छके। हाँ बाजला जिंदा हूँ तमस जिंदा। फोन थोमुत अति पान छक तजुमत। नहीं नहीं, हाँ वो रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। बाजला रिकॉर्डिंग छे वही ऑन नहीं। बेकर माइक बांध तो बे। हो पाए व्हाट्सएप पे।
मीटिंग खत्म हो गई? मैं पूछ रहा हूँ, इधर पूछ रहा हूँ। होगी होगी। आ जा बाहर। अच्छा मैं अंदर आ जा, निकलते चल हैं। ठीक है।
अखिल क्या रहा है? हेलो अखिल।